Hello everyone, welcome to my channel again. So in this video, we are going to discuss how to represent the rational numbers on number line, as well as how to find so many rational numbers between any two rational numbers. And I'm going to discuss complete exercise 1.2 of chapter number 1 of class 8. So let's start this part. The representation of rational numbers on number line first of all. So we'll make a number line over here. So in the middle, we are having 0. And on the right side, we write the positive numbers, basically like 1, 2, 3, 4. And on the left side, this way, we write the negative numbers like -1, -2, -3, and so on. So this is how we represent the number line. Now, our point is how to represent rational numbers. Okay, so let's have a look how we can represent the rational numbers. So for that, first of all, I'll just take an example like which rational number I'm going to represent over here. So suppose I'm taking 3/4 and we have to represent this rational number over number line. So first of all, we'll just make a line like this. And you can see 3/4 is a positive number. So whenever you are having a positive number, so we'll start from 0 and we'll move towards the right side, because positive numbers we represent towards the right side of the number line. So we'll start from 0. Now our next step is we will see the denominator. So here we can see the denominator is 4. So what we will do, we will make 4 parts after this 0. So this is one part, then another part, then one more third part, and then one more. So we are having 4 parts now, and then we will finish it. Okay, so after that, what we are going to do, we will simply write the fractions here. Like the denominator is 4, so we'll start writing like this: 0/4, 1/4, 2/4. So we are writing basically 0, 1, 2 only, but with the denominator 4 here. 3/4 and 4/4. So if you will just check out here, this 0/4 is 0, and this, sorry, that is 4/4. Okay, so if you will just check out here, this 0/4 is 0 and this 4/4 is 1. So this number 3/4 is lying between 0 and 1. Where it is lying, so you have to just mark this point. So this is the representation of 3/4. That is the rational number on the number line. I'll take one more example. It would be clear to you in detail. So now we are going to represent, suppose 2/5 on the number line. Okay, so first of all, we'll make a line here. We can see the number is a positive number. So the same way we are going to start from 0 towards the right side. Now, what we will do, we'll see the denominator. Denominator is 5. So that means we have to do 5 parts. Okay, so we'll make 5 parts here. So one part, second, third, fourth, and fifth. So we had done with 5 parts. Now what we'll do, we'll just write the fractions with the denominator 5. So how we are going to write it, we are having 0. So it would be 0/5. Then after 0, 1, 1/5, then 2/5, then 3/5, then 4/5, and then 5/5. So if you will just check out here, this 0/5 basically is 0 and this 5/5 is basically 1. So this particular rational number is lying between 0 and 1. Where it is lying, you have to check out. Here it is. So you have to just highlight this part. So this is how we have to represent rational numbers on the number line. Now what we will do, we'll represent a negative rational number. So it's not hard, it's just the same way. Only you have to move towards the left side. So let's say the same number, same rational number, but it's a negative one, -2/5. So what we will do in this case, we'll again make a number line here. And now if you just check out, it's a negative number. So negative numbers we represent towards the left side of 0. So we'll not start from here, we'll start from the back end. From here we will start. Okay, 0, and we'll move towards the left side because it's a negative one. So now we'll see the same thing again with the denominator 5. So we'll make 5 parts over here. So one part, 2, 3, 4, and 5. So 5 parts are done here. Now we'll write the numbers in a negative way from right to left side. So we'll write the numbers like 0/5, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5. Now, if you check out, you have to stop
There only whenever you will find the same numerator and denominator. So if you check out 0 by 5 is 0 and minus 5 by 5 is minus 1. So this particular rational number is lying between 0 and minus 1. Where it is lying? Here it is lying. So you have to highlight this part. So this is how we can represent the rational numbers on the number line. Those rational numbers whose numerator is less than the denominator. Now we will talk about the rational numbers whose numerator is greater than the denominator. So let's take an example here. Suppose we have to represent 7 by 4. Okay, so if you just check out here, numerator is greater than the denominator. So in these cases, what we have to do, first of all, I'll just describe a easy way. So make the number line like this only. Okay, and we'll start from 0 and it's a positive number, so we'll start this way. Okay, so now what you have to do now, start writing the fractions like 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, because we are having the denominator 4. Okay, so we'll start writing like this: 0 by 4, 1 by 4. I'll just tell two methods of solving it. So this is the first method. It would be easier for you. So 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4, 5 by 4, 6 by 4, 7 by 4, and 8 by 4. Why we are stopping over here 8 by 4? Because we need 7 by 4 here. So we have to write up to 7 by 4. And we are not stopping here because 7 is not divisible by 4. Sorry. So we'll just check the next number. 8. Is it divisible by 4? Yes. So we'll stop here only. If 8 is also not divisible, then we'll write one more. So this way you will continue. Now just check out here. 0 by 4 is 0. And where the same numbers are there, here it is. 4 by 4 is 1 and 8 by 4 is 2. So if you check out 7 by 4, 7 by 4 is lying over here. So if you check this number line, this 7 by 4 is actually lying between this 1 and 2. So 7 by 4 fraction, a rational number you can say, this is lying between 1 and 2, not 0 and 1. Okay, this is the change. Now, this is the one way of doing. Make the number line start from 0 towards the right side because it's a positive number. Start writing the fractions directly like 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, up to the number which is given, and just write the numbers behind it also till where, like whenever you will find the proper integer, till there you have to write. Okay, so this way you will represent. Now let's see the another way of representing it. So the another way of representing this 7 by 4 is same 7 by 4 will represent. I'm telling the another way. So first of all, what we'll do, we'll divide 7 by 4. So if you will divide 7 by 4, you will find a mixed fraction. 4 ones are 4. 7 minus 4 is 7 minus 4 is 3. So now we'll write it in the mixed fraction form. 1, 3 by 4. If any doubt like how to write in mixed fraction, we write like this: quotient remainder upon divisor. So quotient is a whole number here, remainder in numerator and divisor in the denominator. So this is the mixed fraction. So what you have to do in this case now, we'll just check out this whole number. This is 1. So this number basically it would decide like from where it would start. So it would start from 1 instead of 0. In other terms, what we were doing, we were starting from 0. Now this number partition will start from 1. So how we will represent it basically, we'll make the number line like this. And as we know that we have to write the positive numbers towards the right side of 0. So this is 0. This is, we'll leave a bigger space over here because after 1 we are going to make parts. Okay, so 0, 1, and now after this 1 we are going to start making the parts because the whole number you can see it's 1 here. How many parts? These many parts, whatever the denominator is. So 1, 2, 3, 4. 4 parts are done. Now what we have to do here, this 7 by 4 basically where it would lie, 7 by 4 would lie at the third place of this division. So here we are having the third place here. That means this 7 by 4 actually it's lying over here. This is the identification. Now how you will complete the fractions over here? If you are moving towards the left side, you have to write like 6 by 4, 5 by 4, 4 by 4,
And if you're moving towards the right side, after 7, 8 by 4. Now, if you check out, this 4 by 4 is 1 and 8 by 4 is 2. So this number is lying between 1 and 2 here. So this is the way of representing 7 by 4. Describe it again. So in these type of fraction, what you have to do, first write the mixed fraction of it like this, 1 3 by 4. Now whatever is the whole number, जो भी यहाँ पर whole number है, उसके बाद से हम partition start करेंगे, not from 0. ठीक है, तो जो भी यहाँ whole number आएगा, उसके बाद से हम partition start करेंगे. कितनी partition करनी है, जो भी denominator है, जैसे पहले करते आए थे, तो उतनी हमने partition कर दी. अब ये कहाँ पर लाई करेगा, जो भी हमारी फ्रैक्शन है उसमें जो भी न्यूमरेटर है उस प्लेस पे जो है ये हमारा एक्चुअल फ्रैक्शन लाई करेगा. सो 3 हमारा न्यूमरेटर था, तो थर्ड प्लेस जो है पार्टीशन का, वहां पर हमारा ये एक्चुअली आंसर आएगा. अब आपको लिखना कैसे है फ्रैक्शन, लेफ्ट साइड में उसका कम लिखते जाओ, राइट साइड में उसको इंक्रीज करके लिखते जाओ. सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस पार्ट. Suppose now we have to represent 5 upon 3 on number line. So you can check out 5 is greater than 3. So whenever numerator is greater now, the first step is convert it into mixed fraction. So if you will divide 5 from 3, 3 ones are 3 and the remainder is 2. So it would be quotient remainder upon divisor. This is the fraction. So again, it's starting from 1. So instead of 5 by 3, I'll take 1 any other in which the whole number would be different. Okay, so instead of 5 by 3, I'm taking 10 by 3. Okay, so I'll just erase this part so that you would be clear about it. Now, if you will convert it into mixed fraction, so 3 3s are 9, that is the question. Remainder is 1, divisor is 3. Okay, now check the whole number here. Whole number is 3. That means you will start the partition after 3. Okay, so we'll make the number line here. We'll start from 0. We'll leave the space because we are going to do the partition after 3. This is 1, this is 2, this is 3. Leave more spaces till here. Now after 3, we will start making the partition. How many partitions we have to do? What is the denominator here? 3. That means we have to do 3 partitions after this 3. Okay. So 1, 2, 3 will increase this number line. Okay. So we'll just increase it like this. Okay. Now we'll just end this number line. 3 partitions are done. Now, what is the numerator here in this? This is 1. That means the partition का जो पहला place है, ये वाला, वो हमारा एक्चुअल में आंसर है. ठीक है, किसका आंसर है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, 10 by 3. So 10 by 3 is this basically. Now if you will move towards the left side, तो आपको उसका कम लिखता जाना है और right side में ज्यादा. So this is 10 by 3. I'll write this fraction on the top side because नीचे 1 2 3 है, तो we'll write it on the top side. ठीक है, so this is basically the answer 10 by 3. अब आप left side move करेंगे, so 9 by 3. बस आपको ये स्टार्टिंग नंबर तक के लिखना है, उसके पहले का लिखने की इतनी जरूरत नहीं है. अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपके इसके बीच में भी उतना ही पार्टीशन करना पड़ेगा जितना उसके बाद किया है. ठीक है, सो अब उसके राइट साइड में 11 by 3, 12 by 3. ओके, सो 9 by 3 is 3 which is already written and this 12 by 3 is 4. So अब आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये वाला जो नंबर है जो हमारा क्वेश्चन था, इट्स लाइंग बिटवीन 3 and 4. ठीक है, इट्स नॉट लाइंग बिटवीन 0 and 1. सो दिस इज द वे यू हैव टू डू. जो भी होल नंबर आएगा उसके बाद से पार्टीशन करना शुरू करेंगे. कितना पार्टीशन करना है, जो डिनोमिनेटर है उतना, और जो मिक्स फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उस पोजीशन पे हमें हाईलाइट करना है और वो हमारा आंसर होगा जो गिवन फ्रैक्शन है उसका. तो उस फ्रैक्शन को हम यहाँ लिख देंगे जो गिवन है. उसके लेफ्ट साइड मूव करना है तो कम नंबर लिखना है, राइट साइड मूव करना है तो बड़ा वाला नंबर लिखना है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट. सो ये तो हमारा एक तरीका था. दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, दूसरा तरीका भी जल्दी से देख लेते हैं. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस, जस्ट अ सेकेंड प्लीज. तो दूसरे तरीके में नो नीड टू डू दिस मिक्स फ्रैक्शन. आपको सिंपली एक नंबर लाइन बनानी है यहाँ पर. ठीक है, एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0. आपको बस 0 by 3, 1 by 3 ऐसे फ्रैक्शन स्टार्ट कर देनी है. कहाँ तक, 10 by 3 तक तो करना ही है. ओके, 0 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 3 by 3, 4 by 3, 5 by 3, 6 by 3, 7 by 3, 8 by 3, 9 by 3,
10/3। तो यहाँ तक तो हो गया, बट 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम उसके बाद भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम इसको पहले हाईलाइट कर देते हैं कि हमारा आंसर तो यहाँ पर हो चुका है, बट हमें यहाँ पर स्टॉप नहीं करना, हमें आगे करना है, ठीक है। कितना आगे करना है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। 11/3, क्या 11 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 12/3, क्या 12 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो हमें यहीं स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 4, और इससे पहले कौन सा 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 वाला। सो 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो इसका मतलब ये नंबर जो है लाई कर रहा है इसके बीच में। और इससे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, ये जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ रहा है 2। और कौन सा आ रहा है, ये हो रहा है 1, और ये आ रहा है 0। तो आपको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। बट आपको ये नंबर जरूर लिखने हैं ऊपर जो मैंने लिखे हैं, कि वो किसके अंडर लाई कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है नंबर लाइन, और किस नंबर के बीच में वो लाई कर रहा है, दैट शुड बी ओवर देयर। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है, उसके ऊपर 1 2 3 4 लिखना है। ओके, सो एनी वे यू मे ऑप्ट आउट, पहले वाला भी और अभी वाला भी, जो भी आपको इजी लगे। Okay, this is how we can represent the rational numbers on the number line. Now, the next topic is how to find rational number between two rational numbers. Okay, means दो rational numbers के बीच में कैसे हम ज्यादा rational numbers find out कर सकते हैं। तो I'll just take an example over here. Suppose I took 3/4 and 2/5. ठीक है, हमें इनके बीच में जो है रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने, लेट्स टेक 6, सो वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस ना, सबसे पहला स्टेप है वी विल चेक द डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। सो इफ डिनोमिनेटर इज सेम, तो आपका स्टेप 1 खत्म हो जाता है एक तरह से। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपका स्टेप 1 क्या है कि डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना। सो हाउ वी कैन मेक द सेम डिनोमिनेटर, बाय टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम 4 और 5 का क्या होगा, 20। तो हमें ये दोनों फ्रैक्शंस को, डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। फिर हाउ वी कैन मेक, इसको 20 वी कैन मेक बाय मल्टीप्लाइंग विद 5। तो आपको जब मल्टीप्लाई करे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, और इसमें वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 4, तभी हमारा जो है डिनोमिनेटर 20 होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 15/20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 8/20। अब आपको इनके बीच में 6 देखने हैं, तो 8 और 15 के बीच में 6 कौन कौन से हो सकते हैं, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, पूरे एग्जैक्ट 6 आ रहे हैं। तो जब भी बिटवीन टू रैशनल नंबर्स लिखा होता है तो आपको ये स्टार्टिंग और एंडिंग इंक्लूड नहीं करना है। मार्क माय वर्ड्स, कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, दे राइट द स्टार्टिंग एज वेल एज द एंडिंग रैशनल नंबर्स आल्सो, डोंट राइट द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग, बिकॉज़ द क्वेश्चन इज आस्किंग बिटवीन। बिटवीन मींस उनको छोड़ के जो बीच में रैशनल नंबर्स हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें सीधे सीधे 6 रैशनल नंबर्स मिल गए हैं। एक्सक्यूज मी, let's write those 6 rational numbers. I'll write on the right side 9/20. So you will write like this: 6 rational numbers between 3/4 and 2/5 are. So you will write this line over here. Then you will write 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, and 14/20. So these are 6. But if question would ask like instead of 6, if question is राइट 10 रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो 6 के बदले अगर ये 10 पूछ रहा है तो 6 तो हमें मिल गए, तो 6 वाला केस तो करेक्ट हो गया, बट 10 तो नहीं है। सो इन द केस ऑफ 10 व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट विल डू इन दिस केस, तो जो भी हमारा ये आया है इसको हमें फिर से एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एनी नंबर ऑफ योर ओन चॉइस, किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं 2 से ही कर रही हूँ, आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है। बट कंडीशन इज जिससे आप लेफ्ट साइड कर रहे हो उसी से राइट साइड करना है। तो अब आप नंबर देखिए, 30/40 and it is 16/40। तो 16 और 30 के बीच में क्या 10 नंबर्स आ रहे हैं, 17/40। तो चलो लिख के देख लेते हैं, 17/40, 18/40, 19/40, 20/40, 21/40, 22/40, 23/40, 24/40. How many are done? Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8. So we have tried 2 more. 25/40 and 26/40. तो उससे ज्यादा ही आ रहा है, राइट। 27, 28, 29 वाला भी। तो आपको इस केस में क्या करना है, कोई भी आप 10 इनके बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। एनी 10 जितने भी आ रहे हो, कम है तो फिर किसी नंबर से बाई चांस
फिर से कम हो जाता है सपोज, तो आपको फिर मल्टीप्लाई कर देना है किसी नंबर से, ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन राइट द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। सो इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर हमारे सेम नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर आप लिख सकते हो उनके बीच में, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, so let's switch to exercise 1.2 now. So I'm going to solve complete exercise 1.2. Let's see question number 1. So I'm just showing you the questions now. Just a second. So this is question number 1. Represent these numbers on the number line. First part is 7/4 and the next part is -5/6. तो हमें 7/4 और -5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, देन विल डू द नेक्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज 7/4, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। सो 7/4, क्या न्यूमरेटर बड़ा है छोटा है? बड़ा है। सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, विल मेक द नंबर लाइन। मैं इजी वाला वे कर रही हूँ, तो आपको इजी लगेगा आई थिंक। हाँ, अगर आपको दूसरा वाला लगता है, मैंने पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि कैसे दो तरीके से कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अ पॉजिटिव नंबर, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ से आगे से और राइट साइड जाना है। तो 0/4, 1/4, 2/4, 4 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 4, ठीक है। 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। तो यहाँ 7/4 आ गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं। बट यहाँ स्टॉप नहीं होना है, ठीक है, आपको आगे भी लिखना है। कब तक? जब तक कि ऐसा नंबर आ जाए जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ 8/4, क्या हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं 4 से? यस। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे और हम इस वाले पार्ट को जो है इरेज कर देंगे। आई विल मेक अ शॉर्टर नंबर लाइन। ओके, नाउ दिस वे यू विल रिप्रेजेंट। अब 8/4 जो है किस पे डिवाइड हो रहा है? मीन्स ये आ रहा है हमारा 2 पे, और इससे पहले 4 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है यहाँ पर? यस, दिस 4। ये हो रहा है 1 पे, और 0/4 0। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है 0, 1, 2, और ये 7/4 किसके बीच में आ गया? 1 और 2 के बीच में। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7/4। नेक्स्ट पार्ट इज -5/6। तो नेगेटिव नंबर है, ध्यान देना। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, 0। अब यहाँ पर हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट्स अ नेगेटिव नंबर। सो 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। तो यहाँ -5/6 आ गया, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं पहले। बट यहाँ स्टॉप नहीं करना, आगे बढ़ना है, ठीक है। -5/6, -6/6, 6 से डिवाइड हो सकता है? यस। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे और इस वाले पार्ट को आप इरेज कर देना, ठीक है। इतना, इस वाले पार्ट को हम इरेज कर देंगे। तो आप इरेज कर देना, आई एम नॉट इरेजिंग ना। -6/6 इज -1, और उससे पहले कुछ डिवाइड हो रहा है 6 से? नहीं, या सिर्फ ये 0। यहाँ लिखेंगे हम 0। अच्छा, इसका पहचान क्या है कि ये 0 और उसके बीच में ही लाया करेगा, क्योंकि नोमिनेटर छोटा है। तो जब नोमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो हमेशा नंबर 0 और 1 के बीच में ही लाया करेगा अगर पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव है तो 0 और -1 के ही बीच में लाया करेगा। बट अगर नोमिनेटर बड़ा है तो आपको देखना पड़ेगा वो किसके बीच में लाया कर रहा है। वो आप डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में जो होल नंबर आएगा वहां से आप चेक कर सकते हैं, जो दूसरा तरीका था। तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली फ्रैक्शंस लिखना शुरू किया, जहां पर वो आया उसको हाईलाइट कर दिया, और डिनोमिनेटर से जो भी नोमिनेटर डिवाइड हो रहा है उसका होल नंबर आपको, होल नंबर, और इफ इट इज अ नेगेटिव नंबर तो इंटीजर्स में आ जाएगा, तो आपको उसका इंटीजर आपको ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5/6। लेट्स मूव अहेड नाउ। इस पार्ट को इरेज कर देना, इसको बनाना नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, लेट्स सी, is represent -2/11, -5/11, -9/11 on the number line। फिर से हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो और सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें एक ही बार करना है। सारी अलग अलग नंबर लाइन नहीं होगी, एक में ही कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। Numbers were -2/11, -5/11,
-9/11. So let's see. We'll make the number line first of all. These are negative numbers. तो हमें पीछे से स्टार्ट करना है. ध्यान रखना नेगेटिव में पीछे से स्टार्ट करेंगे यहाँ से. ठीक है. 0. फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? व्हाट इज द डिनोमिनेटर? 11. So 0/11 -1/11 -2/11. 2/11 आ गया. एक इसको हाईलाइट कर देते हैं सबसे पहले हम. ठीक है. एक नंबर रिप्रेजेंट हो चुका है. नाउ -3/11 -4/11 -5/11 दूसरा भी आ गया. तो लेट्स हाईलाइट दिस ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करेंगे. -6/11 -7/11 -8/11 -9/11. फिर से मिल गया. एक और नंबर मिल गया. सो ऑल द नंबर्स वी हैव रिप्रेजेंटेड हियर. बट यहाँ स्टॉप नहीं करना जब तक कि 11 से डिवाइड वाला नंबर नहीं मिल जाए. -10/11 नहीं हो रहा डिवाइड. -11/11 ये डिवाइड हो रहा है किस पे? -1 पे. और इसको हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे. ये -1 और ये सारे अगर आप फ्रैक्शंस देखो तो इनके नोमिनेटर्स जो है 11 से छोटे हैं. इसका मतलब ये 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे. तो सिर्फ आपको यहाँ 0 लिखना है. सो 0 और -1 के बीच में 3 रिप्रेजेंटेशन हमारे हो गए. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. आई होप ये वाला मेथड आपको इजी लग रहा होगा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं. इफ यू वांट दूसरा करना है तो मैंने पहले डिस्क्राइब किया है. यू मे वॉच द वीडियो अगेन. So next move to question number 3 now. Question number 3. तो चलो देख लेते हैं. What is the question number 3? Is write 5 rational numbers which are smaller than 2. 2 से जो छोटे हैं 5 रैशनल नंबर लिखने हैं. तो मैं इसको आपको यहीं पर ही बता देती हूँ. तो 2 से छोटे जो अगर आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर लाइन हमारी कैसी होती है? ऑन द सेंटर वी हैव 0. राइट साइड हम 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं. राइट. लेफ्ट साइड हम लिखते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. यही हमारी नंबर लाइन होती है. पूछा क्या है क्वेश्चन में? स्मॉलर देन 2. 2 से छोटा मतलब 2 से इस तरफ जो भी नंबर्स हैं वो सारे इसके आंसर हो जाएंगे. कितने हैं? 5. तो कोई भी 5 लिख दो. 1 0 -1 -2 -3 -4. तो ये इसके आंसर हो जाएंगे. ठीक है. बिकॉज ईच एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. Integers are rational numbers, right? Why? Because 2 we can write in the form of p by q as 2/1. So this is a rational number p by q form and denominator is not equals to 0. तो सारे integers हमारे rational number होते हैं. तो ये आप कोई भी 5 आप 2 के लेफ्ट साइड वाला लिख सकते हो because they are asking smaller than. अगर यहाँ smaller than के बजाय होता larger तो आपको राइट साइड वाले लिखने थे. ठीक है. So this is the answer of question number 3. Now let's see question 4 here. Question 4 is find 10 rational numbers between. अब आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं. इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो ये मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कैसे निकालने हैं. चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 3 लिखना कैसे है? आपको लिखना है 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2 आर. ठीक है. डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना. स्टेटमेंट के साथ लिखना है 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2 आर. और यहाँ वहां पर एक नंबर लाइन ऐसी रिप्रेजेंट करके दिखानी है. ठीक है. ओके. Now let's move to question number 4. 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं हमें किसके बीच में? -2/5 and 1/2. ठीक है. तो सबसे पहले step number 1 is check the denominator. Is it same or different? It's different. So in the case of different, what we will do? We will make the denominator same. तो कैसे सेम कर सकते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम. तो एलसीएम ऑफ 5 and 2 वुड बी 10. तो आपको डिनोमिनेटर 10 करना है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट एलसीएम ऑफ 5 and 2 is 5 multiplied by 2 which is equals to 10. You will write like this. Now -2/5 multiplied by 2 because we have to make the denominator same, and 1/2 multiplied by 5 because the denominator would be 10 over here as well. Now this is -4/10 and this is 5/10. Now how many they are asking? 10 rational numbers they are asking. So पहले हम देख लेते हैं 10 आ रहे हैं इनके बीच में, नहीं आ रहे. So I'm not speaking like -3/10 -2/10 ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है बोलने में. I'll speak like -3 -2 सिर्फ काउंटिंग के पर्पज से. ठीक है. तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कितने आ गए?
8 आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहे। तो हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, जब भी कम आता है तो उस केस में हमें क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन आई है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, फिर ऑन चॉइस 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जिस भी नंबर से करना चाहते हैं तो हम 2 से ही कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ करना है, बोथ साइड, बिकॉज डिनोमिनेटर को सेम रखना है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी -8/20 एंड इट वुड बी 10/20। अब जरा देख लेते हैं 10 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि कितने नंबर्स हमारे इसके बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे। अब जब नंबर लाइन पे हम लिखते हैं तो -8 और इस तरफ से हमारे -7 -6, तो यहाँ से हमें काउंटिंग करनी है। ओके, तो चलो देख लेते हैं कितने नंबर्स आ रहे हैं। -7, -8 इंक्लूड नहीं करना, स्टार्टिंग एंडिंग इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20। तो हमारे यहीं तक ये 10 हो गए। तो आप कोई भी 10 रैशनल नंबर इनके बीच में लिख सकते हो। सो व्हाट यू विल राइट आफ्टर दिस नाउ, यू विल राइट लाइक 10 rational numbers between the question। ठीक है, -2/5 and 1/2 आर। अब आपको वो रैशनल नंबर्स लिखने शुरू करने हैं। -7/20, -6/20, -5/20, एनी 10। सपोज मैंने -4 स्किप कर दिया, मैं सीधे -3/20 पे आ गई तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो एनी 10 यू में राइट। 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारे। 7, 0 लिखू नहीं लिखू, मैंने स्किप कर दिया, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, लिखना है तो लिख दो। 8 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे। 2/20 एंड 3/20। सो दिस वुड बी द आंसर, एनी 10 यू मे राइट। ठीक है, अप टू 10/20 तक। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। Question number 5, again the same type of question. Find 5 rational numbers between. तो हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। So let's see the first part now. We'll find 5 rational numbers between 2/3 and 4/5. So let's start it. Numbers, rational numbers of question number 5, first part are 2/3 and 2/3 and 4/5. Okay, so we have to find 5 rational numbers between those two. So first step is check the denominator, same nahi hai, so we'll take LCM. So LCM of 3 and 5 is 15. So we have to make the denominator as 15. So 2/3 multiplied by 5 and 4/5 multiplied by 3. This is 10/15 and this is 12/15. तो obviously 10 and 12 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, 5 नहीं आ रहे। तो हमें क्या करना रहेगा, अब हम इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो व्हाट नंबर विल मल्टीप्लाई, आप किसी से भी कर सकते हैं। सपोज मैंने 2 से कर दिया, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, सब ट्रू। ठीक है, तो सपोज 2 से करके देख लेते हैं हम। तो 12/15 ऑल्सो विल मल्टीप्लाई बाय 2। ये कितना आ जाएगा हमारा, इसके बाद से आपको यहाँ लिखना है 20/30 एंड 24/30। तो अभी भी कम है, देखो 21 22 23 सिर्फ 3 ही आ रहे हैं। कभी ऐसा केस आ जाए कि एक बार मल्टीप्लाई करने से भी कम आ रहे हैं, फिर से उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब 20/30 को फिर से किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, ये एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अब आप इसके बीच के नंबर्स जो है 40/60 और 48/60, अब इसके बीच के नंबर्स आप लिख सकते हैं लाइक 41/60, 42/60। तो 5 रैशनल नंबर कोई भी। अगर आपको दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप यहीं पर ही एक बार 2 से जब मल्टीप्लाई करे थे स्टार्टिंग में, उसी टाइम पे ही आप एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक बार में मिल जाएगा। बट बाई चांस आपने कर दिया और ऐसा आ रहा है कि इसमें कम है, तो आप फिर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप उसका आंसर लिख सकते हैं। सो नाउ व्हाट यू विल राइट हियर, आई एम राइटिंग द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट। 5 rational numbers between, what is the question, 2/3 and 4/5 are। अब आपको वो 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं बीच के। 41/60, 42/60, 43/60, 44/60,
45/60 और भी हैं बट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 ही पूछे गए हैं और स्टार्टिंग और एंडिंग इंक्लूड नहीं करना. So this would be your answer. ठीक है. So let's see the second part now. Same way, quickly solve it by your own as well. The rational numbers are -3/2 and 5/3. Quickly solve it by your own. We'll make the denominator same. LCM is 6. I'm writing directly now. -3/2 multiplied by 3. You will write here LCM. Okay, write that part. And 5/3 multiplied by 2. So this would be -9/6. This would be 10/6. -9 and 10 के बीच में let's see 5 आ रहे हैं. -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6. Yes, 5 आ रहे हैं, उससे ज्यादा ही आ रहे हैं. So no need to multiply in this case. ठीक है, जरूरी नहीं हर केस में मल्टीप्लाई करना ही करना है. जब नहीं आ रहे तो करना है, आ रहे हैं तो नो नीड. ठीक है. तो अब हम इसके आंसर यहीं पर ही लिख देंगे. 5, I'm just writing in short form now. Rational numbers between -3/2 and 5/3 are -8/6, -7/6, -6/6 is -1 only. You can write -1 as well. -5/6, -4/6, -3/6. 5 they are asking, so we'll not write this -3/6. We'll write up to here only. So you may write any 5. It's not like एक order में लिखना है. Any 5 between these two. Let's move to the third part of it. 1/4 and 1/2. Quickly solve it and tell me the 5 rational numbers between these two. Okay, so here we will see the LCM. It's not like LCM is 8 here. So LCM of 4 and 2. अगर आप निकालते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 एक्जेक्टली सेम. तो जब तक आपको 1 1 नहीं मिल जाता तब तक वो चलता जाता है. नाउ किससे किससे डिवाइड किया? 2 से 2 बार. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 4 इज द एलसीएम हियर. ठीक है. सो एलसीएम ऑफ 4 and 2 is 4. सो हमें डिनोमिनेटर 4 बनाना है. ठीक है. सो 1/4 तो 4 ही है, so no need to multiply this. 1/2 को how we can make 4? By multiplying with 2. So it would be 2/4 basically. So I'll write this in the next line like this. And now what you will write? 1/4 comma 2/4. तो इनके बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा अभी परफेक्ट हम फिर कह सके. हमें 5 निकालने हैं तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. अगर आप 2 से करते हैं तो क्या आता है देखो. मैं अभी करके नहीं दिखा रही, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. तो ये आएगा, सिर्फ एक ही आ रहा है. तो हम 2 से करने के बजाय एक बड़े नंबर से कर देते हैं. सपोज मैंने 10 से कर दिया. ठीक है. So I'll just multiply with 10. You may multiply with any number. अगर मल्टीप्लाई करने पे कम आ रहे हैं तो फिर से उसको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. सो इट वुड बी 10/40 एंड 20/40. अब इजीली आप 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं इनके बीच में. सो विल राइट लाइक 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 and 1/2 are any 5 between these two. Sorry, 11/40. Just a second. 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40. 5 are done, so we'll stop here. Okay, so this is like how we can find the rational numbers between two rational numbers. Now we'll just start with question number 6. So I'm just going to show that question to you. Just a second. Write 5 rational numbers greater than -2. So this question is similar as question number 3. Okay, so quickly see how we can do this part. I'll just describe here only. So we'll just see the number line greater than they are saying. So if we make the number line like this, so -2 के बड़ा कौन से आएंगे इसके राइट, यहाँ पर राइट साइड में जो भी आएंगे, -1, 0, 1, 2, कितने पूछने हैं? 5. तो 1 2 3 4 3. तो इस तरह से आप एक बार नंबर लाइन बना के दिखा देना. ठीक है. नाउ यू विल राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर. इसके -2 नहीं लिखना, उसके बाद वाले लिखने हैं. -1 0 1 2 3. ठीक है. ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. अदरवाइज आपका दूसरा तरीका क्या है, इसमें -2 को -2/1 हम लिख सकते हैं.
इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे सपोज मैंने 5 से कर दिया, -10/5। अब आप उसके राइट साइड लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। आपको ये सिंपल लग रहा है ये वाला, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। So now let's move to the next last question of this exercise, seventh question. Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. Quickly करके दिखाओ जल्दी से, अभी हमने डिस्कस किया कैसे निकालने रैशनल नंबर्स 3/5 और 3/4 के बीच में। So let's see last question. We have to find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. So denominator different, we'll take LCM. So LCM of 5 and 4 is 20. We'll make the denominator as 20 here as well. Now I'm not describing these steps because you know how to make the denominator same. Okay, so it would be 12/20. It is 15/20. They are asking 10 rational numbers between, but here we are getting only 2. Okay, so what we'll do, we'll multiply it. If you want to do it in a single go, then what you will do in this case, just multiply with a bigger number. Otherwise, you have to multiply again. Na? So I'll just multiply with 5. So 15/20 also with 5. Any number you may take here. It's not like कि 5 ही लेना या 5 2 ले लिया मैम ने, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर आप 2 लेते हैं तो आपके 10 रैशनल नंबर्स नहीं आएंगे, फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक ही बार में थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया। So now 12 5s are 60, 20 5s are 100 and 15 5s are 75, 20 5s are 100। तो डिनोमिनेटर सेम रखना है, जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करो उसी से वहां करना है। अब आप कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हो इनके बीच में। तो 10 rational numbers between 3/5 and 3/4 are, लिखना स्टार्ट करते हैं। 61/100, 62/100, 63/100, 64/100. Don't include the starting and the ending number repeating again. I'm repeating it again and again because आप include कर देते हैं और उसमें एक रैशनल नंबर कम कर देते हैं, ठीक है, तो इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि बिटवीन पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे। 69/100 एंड 70/100, 10 आर डन, तो अब और लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, आप 61 62 से मत करो, आप बीच पे कोई भी लिख दो। तो दे आर जस्ट आस्किंग 10 rational numbers. So this is about exercise 1.2. I hope it's clear to everyone. Still, if you are having any problem, you may ask me by writing in the comment box. और इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली आपको कॉपी में करना है, ठीक है। My video, do like, share and subscribe my channel. Bye bye everyone.